Good morning, everyone. Myself, Professor Nidhi Joshi, and I'm discussing about the subject image processing and computer vision. The subject code for the subject is CS803. In that, I'm discussing about the topic that is the image representation and description. As I discussed, like in the previous class, I was talking about what is the Hoe transform algorithm. For that, we are going for the classical Hoe transform, and basically in the previous class we have discussed like the Hoe transform. Basically it is a technique to isolate the feature of a particular shape from the image. So like my agenda for the session is to discuss what is a fitting. So first let us discuss like what is a fitting. Like fitting is about trying to fit the observed data into the parametric model that we are assuming whole. If we are having the certain set of the object, the certain set of the image, the data that we are having, that data that we are going to fit into the model, the model that we are having. The process of fitting such model to the data involve estimating the parameters that describe the model such that the fitting error is minimized. Like in this thing, we have to take care into consideration like whatever the observed data that we are having. So that should going to match the estimated the parameter, the model that we are having, so that the error that is going to cause by placing that observed data over the parametric model, the error should be minimized. So to understand this thing, let us consider an example of the line fitting. Like we are having a given set of the point in the 2D. The goal, we are having a given set of the point. We are talking here about the line fitting. So line both are having the starting and the end point. So we are having the set of the points in the 2D. Here the goal for us is to find the parameter that describe the line so as to best fit the set of the 2D data. So if we have to fit the observed data that we are having the set of the points, and हम लोगों का यहाँ पे गोल ये रहता है कि we have to particularly fit the line into the parametric model. So और सेकेंड गोल हम लोगों का यह रहता है कि जो एरर रहती है दैट शुड बी मिनिमाइज. सो सिमिलर प्रॉब्लम्स कैन बी डिफाइंड फॉर अदर ज्योमेट्रिक like the same thing, this fitting that we can go for the curve, homographic transformation, fundamental matrices, or even the object shape also. But हम लोगों को like we have to take care into consideration that the fitting error should be minimized. So we have considered one more example. Like in this, the goal is fit a line. We have to fit the line. We have to fit the line. ये एक building की image है. The fitting line in an image can be useful for instruments to see the vanishing point. यहाँ पे if we are placing the हम लोगों को यहाँ पे line fit करनी है, तो जो भी हमारी line है that should ये उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है और दैट शुड फिट टू दिस प्लेस. सो इफ यू आर एस्टिमेटिंग एन होमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, सो हम लोगों ने एक एग्जांपल और कंसिडर किया है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. वी हैव द रेड डॉट्स दैट लाइज ऑन द सेम प्लेनर रीजन. हम लोग बात कर रहे हैं होमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की. यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये हम लोगों ने रेड डॉट से स्पेसिफाई किए हैं. वेयर वी हैव द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द सेम प्लेनर रीजन एंड दैट आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट व्यू. हम लोगों ने एक व्यू फ्रंट से कंसिडर किया है, एक व्यू हम लोग टॉप से कंसिडर कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट द पॉइंट्स जिसको हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है. वी हैड स्पेसिफाइड इट विद द रेड डॉट. They lie on the same planar region. We expect them to be related by the homographic transformation. हम लोगों का यहाँ पे गोल क्या है? The goal here would be to fit such a homographic transformation given the set of the corresponding point. जो भी हम लोगों ने यहाँ पे line consider करी है that should be going to fit to this.
नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है. हियर वी हैव कैलकुलेटिंग द एफ पॉइंट. In this, the goal is to fit the fundamental matrix transformation F that relate like 7 point हम लोगों ने यहाँ consider करे हैं 1 2 3 4 5 6 7. So that the line should be going to fit it here. Fitting a 2D shape template. Fitting a 2D shape template. यहाँ पे हमारे पास एक letter है and that is the observed data, and that observed data that we have to go into this planar जो हमारे पास coordinate से it should be going to fit this letter going to fit the whole over this template only. In the same way that is for the 3D object. यहाँ पे हम लोगों ने एक कार का एग्जाम्पल कंसिडर किया है 3D शेप टेम्पलेट ऑफ अ कार विद एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द कार. दे कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड. यहाँ पे लाइक फिट कैसे होना चाहिए. वी हैव टू कंसिडर द फ्रंट ऑल द व्हीकल्स ये जो लाइट्स है लाइक हम लोगों ने डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ द व्हीकल दैट शुड बी गोइंग टू फिट. इसका एक एग्जांपल भी है लाइक जनरली सम लेंस कार्ड एक एडवर्टाइजमेंट आता है दैट इज ऑफ द लेंस कार्ड. तो उसमें लाइक वर्चुअली लाइक यू कैन प्लेस योर इमेज over that site and you can try the different frame. तो frame से like you will get a prediction like which frame will be going to suit your face and will look ultimately आप लोगों का purpose क्या रहता है. The purpose is like you will get a clear vision. Clear vision के साथ at least you should look good in the picture. So the fitting, matching and recognition that are the interconnected problem. So we are talking about fitting, matching and recognition, like all those things that are the interconnected problem. Fitting when it will be प्रॉब्लम कब होगी व्हेन इट विल बी लाइक जो भी हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है इफ़ यू आर गोइंग टू फिट इनटू सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेम जिसके कारण हम लोगों का एक गोल ये भी रहता है कि द नॉइस that occurs during the fitting that should be minimum. So like in order to achieve this goal to achieve this goal, so the fitting becomes problematic in presence of if you are having the noisy data, if you are having the outlier, if you are having the missing data. So first let us consider the noisy data. The data may not always fit the model exactly because of the measurement or like if some noise is there, noise के कारण will not get the sharp edges in the image. like हम लोगों को एक image में कुछ distortion रहेगा like imperfect edges, sharp edges will not get. So in that case will not get the in a simple word like mathematically हम लोग बात करें तो will not get the exact measurement. So the data may not always fit the model exactly because of the measurement or the detection noise, the critical issues it involves like the noisy data. So here if we are talking like कुछ noise के कारण if we had considered the image तो हम लोगों को यहाँ पे if we have to fit the frame over here then it's difficult. सेकेंड वन इज लाइक हम लोग 2D की बात कर रहे थे. So the model like हम लोग we are going to place this letter over this template. So the model may not fit exactly the data because of the interclass variability. The shape of the template may be different from the observation. If there is no कुछ noise के कारण disturbance है तो will not get the exact measurement. सेकेंड हम लोगों ने बात करी थी कि like in the presence of the outliers also like एक problem और आती है another class of the problem stems from the presence of the outliers. Outliers क्या होते हैं या outliers क्या होते हैं. Outliers is a data point that is not explained by the model but it still appear among the data point that we wish to fit. So
यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। एक ये एग्जांपल है एक हाउस का। लाइक यहाँ पे वी आर हैविंग द 4 पॉइंट, वी आर हैविंग द 4 पॉइंट। यस, ये हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसिडर किया है हाउस का। सो द आउटलियर इज अ पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ये वाला जो है, जो ब्लू कलर का जो पॉइंट है, दैट इज एन आउटलायर। लाइक दैट आउटलायर इज अ डेटा पॉइंट दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द मॉडल, बट लाइक इट्स स्टिल appear in the image. So the pair of the corresponding point is clearly incorrect, but nevertheless, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी कंसिडर किया, यहाँ हम लोगों ने फ्रंट व्यू कंसिडर किया, यहाँ पे हम लोगों ने टॉप व्यू कंसिडर किया। तो ये वाला जो दैट इज द ब्लू कलर पॉइंट, that we are calling it's a outlier. The pair of the corresponding point is clearly, but nevertheless it may be produced by mistake by the algorithm that generate, like एक point generate हो रहा है, that is the data point that is still appear in the image. So the fitting process should somehow be able to account for it. Like कुछ unnecessary point रहते हैं जिसके कारण भी it's very difficult to exactly fit the data over there. Or next है, we are having the missing data. Like if the certain point is not there in the image, so then that time also it's very difficult to fit the particular object, to fit the observed data into the exact template. So that's all in the session. Uh, in case if you are having any problem related to the fitting topic, just let me know. Thank you.